Hello student, I am Mrityunjay sir and today we will talk about reaction of metal with solution of other metal salt। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था बाबू कि मेटल जब रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल सॉल्ट फॉर्म करेगा। और उस मेटल सॉल्ट को आज हम लोग किससे रिएक्ट करा रहे हैं, सेकेंड मेटल से, कोई अनदर मेटल से। तो जब ऐसा करते तो डिस्प्लेसमेंट टेस्ट मतलब जो सॉल्यूशन होगा सॉल्ट बी का, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ जो बी होगा मेटल का, वो डिस्प्लेस हो जाएगा और ए के पास सॉल्ट सोल्यूशन आ जाएगा और मेटल भी कम्प्लीटली अलग हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि हाई रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट को क्या कर सकता है, लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है। सारा डिस्प्लेस करना पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू क्या दिए, FeSO4 प्लस Cu। पहले इस रिएक्शन को देखो तो Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन कैसे हुआ, तो Fe2 प्लस होता है, Cu भी 2 प्लस और SO4 2 माइनस। तो Fe का SO4 के पास जाएगा तो क्या फॉर्म करके देगा, FeSO4 और प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा, Cu डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पे Cu पास में था इसके SO4 के, और यहाँ क्या है Fe हाई रिएक्टिव होने का इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग याद कैसे करें। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक बार आप देख लो, हाई रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ। इसमें पोटेशियम जो है सबसे हाई रिएक्टिव, उसका सोडियम, उसका कैल्शियम, उसका मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर प्लम्बम, लेड, प्लम्बम, पीवी, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया, उस ट्रिक को आप देखो, देखते चलना आपको याद। जैसे इस तीनों को मैंने एक साथ किया है और पर क्या बनाया है, PSC, पटना साइंस कॉलेज। याद रखना PSC सबसे हाई है, मतलब ये कॉलेज जो है सबसे ज़्यादा, पटना साइंस कॉलेज जो है बिहार में रहता है, रिएक्टिव होकर रहता है। मतलब काफ़ी यहाँ पे मारपीट होते रहता है, इसलिए मैंने इसको रिएक्टिव में नाम डाल दिया है कि पटना साइंस कॉलेज काफ़ी रिएक्टिव है, काफ़ी वहाँ मारपीट होता है इसलिए। तो पी से क्या, पी से पोटेशियम, उसका सिंबल के, एस से सोडियम, उसका सिंबल Na, और सी से कैल्शियम, उसका सिंबल Ca। तो ये मेरा हो गया पटना साइंस कॉलेज PSC। पटना साइंस कॉलेज मेरे लिए किसका आ गया, इसका। अब दूसरा मैंने, लेकिन मज़ा भी खूब आता है पढ़ने में, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं, पॉलिटिक्स होता है तो खूब मज़ा आता है। तो उसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाया, MAZ, मज़ा। अब मज़ा के लिए क्या है, मज़ा के लिए है कि M से हो गया मेरा मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम और Z से जिंक। अब उसके बाद मैंने इस दो मेटल के लिए बनाया Fe और Pb प्लम्बम होता है, तो Fe को आयरन कहते हैं और P को प्लम्बम। तो उसके बाद क्या किए हम, IP एड्रेस किसी का चुरा लिए, और IP एड्रेस चुरा करके हम, या IP याद रखोगे, IP मतलब आयरन और प्लम्बम होता है। उसका बाद आता है आपका हाइड्रोजन। तो आप हाइड्रोजन याद रखोगे कि हाइड्रोजन जो है सो एक लेवल है जिसके नीचे वाला मेटल क्या होगा, लेस रिएक्टिव। तो इसके नीचे के लिए हमने बनाया CmSpG, क्योंकि CmSpG का मतलब क्या, C से कॉपर, M से मरकरी, S से सिल्वर, P से प्लेटिनम, बीच में एक प्लेटिनम आप डाल दोगे, और G से गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखने में ईजी होगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन से नीचे लोगे तो CmSpG याद रखोगे, हाइड्रोजन से ऊपर वाले में एक सिर्फ याद रखना है कि IP एड्रेस यहाँ पे कवर कर लेना है, IP का दिया आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसका तो ऊपर वाला याद ही हो जाएगा आपको कि PSC MAZ, पटना साइंस कॉलेज, और MAZ मतलब मज़ा आया वहाँ पढ़ के। तो इस तरीके से आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जैसे इस रिएक्शन को अगर हम ऐसा लिखें Cu प्लस FeSO4, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये रिएक्शन गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि Cu लेस रिएक्टिव और Fe हाई रिएक्टिव है, तो ये इसके सॉल्ट को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो इसको हम लोग एक रिएक्शन से देखते हैं, एक एक्टिविटी से देखते हैं। We will require copper sulfate, iron nails, distilled water, a beaker, measuring jar, test tubes, 2 clamp stands, a piece of thread and a glass rod. Take sufficient quantity of distilled water in a measuring jar and pour it into a clean beaker. To this, add a required quantity of copper sulfate. Stir the contents in the beaker using a glass rod
until the copper sulfate crystals in the beaker dissolves completely. Pour sufficient quantity of copper sulfate into a test tube. Clamp the test tube to a stand. Then pour sufficient quantity of copper sulfate into another test tube. Clamp this test tube to another stand. Take 2 iron nails. Clean these by rubbing them with sandpaper so their color appears grayish. Tie one nail with a thread. Immerse this into one of the test tubes containing copper sulfate solution. Keep the 2 test tubes undisturbed for about 15 minutes. After 15 minutes, the color of the copper sulfate solution containing the iron nail turns light greenish color. Disturbed for about 15 minutes. After 15 minutes, the color of the copper sulfate solution containing the iron nail turns light greenish color, whereas the color of the solution in the other test tube does not change. The greenish color of the solution is due to the presence of Fe2+ ions. Remove the iron nail from the solution. Compare it with the other nail. There is a brown coating of copper on the nail that was dipped in the copper sulfate solution. The other nail. Compare it with the other nail. There is a brown coating of copper on the nail that was dipped in the copper sulfate solution. The other nail retains its grayish color. In this reaction, the ferrous ions displace copper ions from the copper sulfate solution. Students, in today's experiment, we will be looking at the displacement reaction of metals. The chemicals that we will need are a beaker of copper 2 sulfate solution, as well as a strip of zinc metal. What do you think will happen if we were to place this piece of zinc into the solution? Let's find out. We observe that as the reaction proceeds, the solution changes from blue to colorless. In addition, a reddish-brown solid also forms on the surface of the zinc metal. So what is the chemistry behind this? Let's take a look. This is a beaker of copper 2 sulfate solution. The solution is blue due to the presence of the copper ions. What will happen if we add a piece of zinc into the solution? Let us take a closer look at the reaction. The piece of zinc metal is made up of many zinc atoms, which are packed regularly in layers. If we take a look at the reactivity series of metals, we know that zinc is a more reactive metal than copper. As a result, zinc has a greater tendency to form positive ions. This can be represented using the ionic equation as shown. In forming the zinc ion, zinc metal loses 2 electrons. Thus, we can say that zinc is oxidized. Copper, on the other hand, is a less reactive metal. Thus, it prefers to remain as an atom instead. This can be represented using the ionic equation as shown. The copper ion that is present in the solution takes in the 2 electrons to form copper.
Since the copper ion gained 2 electrons, we can say that it is reduced. Over time, as the reaction proceeds, more zinc ions go into the solution and more copper atoms are being deposited onto the surface of the metal strip. As such, we can say that the more reactive zinc metal has displaced copper, the less reactive metal from its salt solution. Now, let us check if you have fully understood the concept of the reactivity series of metals and how it directly affects the displacement reaction of metals. Over here, we have a beaker of colorless zinc sulfate solution and a strip of reddish-brown copper metal. What do you think will happen if we were to place this piece of copper into the solution? Let's find out. We observe that there is no reaction between copper and zinc sulfate. Why is this so? If we take a look at the reactivity series of metals, we know that copper is less reactive than zinc. Thus, both the copper atoms and zinc ions are happy to remain in their original states in this case, and no redox reaction occurs.